अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। दोबारा थोड़े एक इंटरवल के बाद आज मैं आया हूँ आपके लिए एक बुक लेके। अच्छा, जिन ऑथर की मैं बात करने लगा हूँ वो है युवाल नोआ हरारी। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने उनकी बुक्स पढ़ी हुई होंगी, उनके बारे में सुना हुआ भी होगा। युवाल नोआ हरारी की जो फर्स्ट बुक थी होमो सेपियंस या सेपियंस, दैट वाज क्वाइट अ गुड बुक। और उसके बाद सेकंड बुक थी ड्यूस। तो मैंने दोनों बुक्स पढ़ी हुई थी, लेकिन काफ़ी पहले पढ़ी थी। एक्चुअली चैनल स्टार्ट करने से बहुत टाइम पहले पढ़ी हुई थी, तो आई हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन कि उसमें कितना क्या लिखा हुआ है और किस तरह से मुझे उसको रिव्यू करना चाहिए। तो आई वाज ऑलवेज पुटिंग इट ऑफ कि मैं कभी इन बुक्स का भी रिव्यू करूँगा। सो सेपियंस इज़ अबाउट द पास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ड्यूस इज़ अबाउट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत हिस्टोरिकल इनके अंदर उन्होंने बातें की हुई हैं। दे वर एक्चुअली गुड बुक्स व्हेन आई रेड देम। और मैंने यही सोचा था कि मैं एक दफ़ा दोबारा इन्हें पढ़ूंगा, या एटलीस्ट इनके पार्ट्स बिट्स एंड पीसेस पढ़ूंगा दोबारा से, एंड देन आई रिव्यू दीज बुक्स एज वेल। सो अभी रिसेंटली आई सॉ हिज फोर्थ बुक विच इज़ नेक्सस इन द बुक स्टोर्स, और मैंने सोचा कि मैं नेक्सस पढ़ूँ। बट बिफोर रीडिंग नेक्सस आई थॉट कि आई शुड रीड हिज थर्ड बुक जो मैंने नहीं पढ़ी थी, विच वॉज 21 लेसन्स फ्राम द 21st सेंचुरी। एंड सो लाइक आई सेड, आई लाइक दिस ऑथर। इनकी बुक्स अच्छी थी, लाइक इनका जो थिंकिंग माइंडसेट था या सोचने का तरीका था, आई ऑलवेज इन्जॉयड इट। एंड मैं सोचता था कि he puts a lot of thought and a lot of hard work into researching about the things that he's talking about. Unfortunately, when I read this book, I think it's one of the worst books I have ever read. It's extremely disturbing, और इसमें I feel like कि वो अपने opinions को as facts present करते हैं, which is extremely dangerous. And I earmarked two things to discuss, and I'll read this word by word. I will even tell you कि इसका पेज नंबर कैस कौन सा है, ताकि आप लोग अपने लिए भी ये देख सकें. So page 110 in this book, he says, Western attempts to impose democracy and human rights on Muslim nations resulted in a violent Islamic backlash, and a wave of Muslim immigration coupled with Islamic terrorist attacks caused European voters to abandon multicultural dreams in favor of xenophobic local identities. I think it's extremely disturbing, and even now, as I come to West and I sometimes see the way people look at me and sometimes the way that we are treated, इस चीज़ को इतना सिंप्लीफाई कर देना कि जी वेस्ट wanted to bring human rights to countries like ours, और हमें वो नहीं पसंद था, इसीलिए we came to be against them. And for me, this is an extremely disturbing and extremely bad thing. और ये I mean 21 lessons, because he's divided this book in 21 chapters, different chapters, and 21 themes के ऊपर वो बात करते हैं. And I feel like कि वो होता है ना, jack of all trades, master of none. He's not even jack of a single trade. He has, I mean, आप ये बुक पढ़ें and आप सोच रहे थे कि यार ये like what the hell is this guy talking about, like what is his problem, you know. And then I move on to page 256 of this book, जिसमें वो कहता है कि in USA, right-wing conservatives tend to care far less about things like pollution and endangered species than left-wing progressives, which is why Louisiana has much weaker environmental regulations than Massachusetts. Um, इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं ये सारे, जब आप इनको इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, तो आप अपने ओपिनियन को एज अ फैक्ट प्रेजेंट करें लोगों को, एंड पीपल जो इम्प्रेशनेबल हैं वो आपके ओपिनियंस को एज फैक्ट मान सकते हैं. एंड that's why I think this book is extremely dangerous. I hope I was able to convey my message properly. But मैं तो जब मैंने पिछला पैराग्राफ पढ़ा, पेज 110, I was already very disturbed by the point कि मैं ये बुक ख़त्म नहीं करना चाहता था. But I still wanted to go through this book, and that is why I actually did finish this book. कि मैं देखना चाहता था कि क्या does the author try to redeem himself, but it keeps on getting worse and worse and worse. और इसके arguments जो हैं, इसकी research जो है, it keeps on getting worse. Like I mean, this author, he lost all respect from me, at least. Yeah, so I mean, you can still read this book and form your opinions. Maybe इसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं AI के related. जब मैं AI से related पढ़ रहा था, तो AI का क्योंकि first chapter ही था, so there are things that he's talking about in relation to AI, which I think कुछ interesting थी. So it's not like everything is bad about this book, but most of the book is bad. And जिस तरह से बस वो अपने ओपिनियंस को एज फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, आई रियली डिड नॉट इन्जॉय दिस. आई विल रिव्यू अनदर बुक वेरी सून. और उसके अंदर ऑथर से इसके जब हम इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को इतना सिंप्लीफाई करके यस और नो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग.
और जिस तरह से ये भी युval नोआ हरारी इस तरह की अपने ओपिनियंस को, अगेन आई से दिस, अपने ओपिनियंस को फैक्ट्स बना देते हैं या येस और नो सिचुएशन में कर देते हैं या ईदर और कर देते हैं. लाइफ इज़ नॉट ईदर और ब्लैक एंड वाइट, देर सो मच ग्रे एरिया इन एवरी थिंग. अगर लुइसियाना के लोग जो हैं मे बी दे, इट्स नॉट कि वो जो है इन्वायरमेंट के केयर नहीं करते, मे बी दे जस्ट वॉन्ट चीपर मीन्स of transportation, and a fossil fuel at that time or in that place whenever he was doing his studies, if it was a cheaper option, then maybe that is why the Louisiana people preferred like not caring about the environment. Maybe there comes a point when जब electric vehicles या carbon free जो technology है, if it becomes cheaper, then Louisiana people will start preferring those technologies. But generally I feel like I don't think, by the way, I don't think I'll be reading this author's fourth book, which is Nexus, and I really don't think I'll be reviewing his first two books either, or I'll be reading those either, because I also think when I was reading those books, maybe I was at a very different stage in my life and I was still learning, or at the early stages of my learning. I still am at the early stages of my learning, but like as you keep on reading more authors and learning more views, you realize that some of the opinions that you held on to are now outdated. And I do feel like when I read, or if I read his Sapiens or Deus again, I will feel maybe some sort of similar naivety in his thoughts and in the way that he writes things. So yeah, this was the review of this book. I hope you guys like it, and if you have read this book, आपने अगर ये किताब पढ़ी हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि what did you think about it. It would be very interesting to know different perspectives, because आज तक I think it's just the second book that I've hated on this YouTube channel. पहली थी I think Midnight Library. वो तो मैंने पूरी पढ़ी भी नहीं थी, and this is the second one. So looking forward to hearing what you guys think. Thank you. Allah Hafiz.